નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સંદેશના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં હું સુભાષ તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, એક એવી પરંપરા જેણે ગુજરાતના વ્યાપારને એક વેગ આપ્યો, એક એવી પરંપરા જેણે ગુજરાતના વિકાસને વેગ આપ્યો, એક એવી પરંપરા જેણે દરિયામાં માર્ગ કરીને વિકાસના નવા રસ્તા શોધ્યા. આ પરંપરા એટલે વહાણ બનાવવાની પરંપરા, જેનો વર્ષો જૂનો એક ભવ્ય ઇતિહાસ સમજવા માટે હું સાલ સ્કૂલ ઓફ આર્કિટેક્ચર ખાતે આવ્યો છું. તો ચાલો ત્યારે ઝડપથી એક મુલાકાત લઈએ. Every time SAL does some different work for the society, by the students, and we try to make something different every time. So this annual exhibition, we were also different for the last 2.5 months. We have been, exploring the heritage, the maritime heritage rather I should say, and that is in Gujarat, in Mandvi. So our students and all the faculties, coordinators, myself, all had gone to Mandvi to check whether it is possible for the students to go with this or not. Once we went there, then we made up a mind that yes, this is a heritage of India. This is 500 years old heritage of India, in which हमारे ही देश की यहाँ से कार्गो शिप्स, वुडन कार्गो शिप्स बनते हैं एंड देन दे सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड. 400 साल से ये हेरिटेज कल्चर है. इसके रिगार्डिंग हमने जब स्टडी किया टेक्निकली, तब हमें पता चला कि मलेशियन साल के अंदर पूरा बोट बनाया जाता है और उस मलेशियन साल के अंदर जो मिडल पार्ट होता है, सेंटर पोर्शन पठान, वो पठान के अंदर से पूरे रिब्स निकाल के और बिना ड्राइंग के ये पूरी चीज़ क्रिएट की जाती है. ये कार्गो शिप है. कार्गो शिप्स के अंदर इसके अंदर से पूरा ट्रेड रूट, जो अभी फ़िलहाल हमारे भारत देश के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हमारा ट्रेड रूट कैसा, हमारे पास नेवल टेक्नोलॉजी कैसी. तो उस नेवल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि 400 साल से हमारे यहाँ पर ये हेरिटेज कल्चर चला आता है और उसके साथ में हम लोग वुडन बोर्ड के साथ में हम लोग इतने साल से पूरा ट्रेडिंग कर रहे हैं मिडल ईस्ट के साथ, अफ्रीका के साथ. और इसकी जो बनावट है पूरी की पूरी, ये इंडियन शेप आपको यहीं पे सिर्फ इंडिया में ही क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा. बाकी अगर आप मिडल ईस्ट और अलग जगह पर जाते हो तो वहाँ पर उनकी पूरी बनावट पूरी अलग है. हमारे यहाँ पर हमें 3 सीजन फेस करनी होती है. तो मेजरली जब जून, जुलाई और अगस्त का वक्त होता है, उसके अंदर हमें बोट की ये जो बनावट है और ये जो शेप है, ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है. મિત્રો, લગભગ 400 વર્ષ જૂની આ વહાણ બનાવવાની પરંપરા જે કચ્છની ધરતી પર શ્વાસ લઈ રહી છે, જેની હુબહુ છબી વિદ્યાર્થીઓએ સાલ કોલેજ ખાતે ઊભી કરી છે, જેની મદદથી આપણે ગુજરાતના ભવ્ય વારસાને ખૂબ જ નજીકથી સમજી શકીએ. બસ ત્યારે આવી સરસ મજાની સફરનો સાથી બનીને હું આપને મળતો રહીશ. દેશ દુનિયાની તમામ ખબર માટે આપ જોડાયેલા રહેજો સંદેશ ડિજિટલ સાથે.